Hello learners, let me introduce myself. I am Krishna Mohan, an IAS officer from the Haryana cadre. I belong to the 1977 batch and I retired in the rank and scale of Chief Secretary from Government of Haryana. Well, during the 36 years of service, I have held some of the most crucial and challenging assignments both in Government of Haryana as well as Chandigarh administration. Now, the civil service papers comprise of one important paper which is called as GS4, and that is Ethics, Integrity and Aptitude. In this paper, there are two parts. One is called the theory part and the other is called case studies. So today I am going to take up one such case study, how to examine a case study, how to analyze a case study, and how to suggest a resolution of the case studies. Case studies normally relate to some ethical challenge or dilemma which a civil servant or a government officer faces during his service. So these are situations of predicament, and one has to solve and come out of that predicament by suggesting short-term and long-term measures. So let us take this particular case study. The case study runs like this. You are recently posted as district education officer in a rural district, and there is already low gross enrollment in the various schools of that district. Upon investigating the matter, you found that many teachers are regularly absent or only come to the schools to mark their attendance, and this has led to many students not attending the school. The problem is further compounded as a few of the schools had to be closed down because of the low student turnout, and they were merged with the district school which is situated a little far away. अब बहुत सारी फैमिलीज प्रोटेस्ट करने लगी कि जी इन स्कूल्स को डिस्ट्रिक्ट स्कूल के साथ मर्ज नहीं करना चाहिए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट स्कूल बहुत दूर है और वहां पहुंचना भी आसान नहीं है. तो द एजुकेशन मिनिस्टर हैज आल्सो प्रॉमिस्ड टू इंस्टॉल ए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम टू एंश्योर द रेगुलर अटेंडेंस ऑफ टीचर्स and also has passed on instructions to all district education officers. However, you do not think, आपको ऐसा लगता है कि ये जो सही सिस्टम है, ये तरीका है, ये सही तरीका नहीं होगा. यानी तरीका जो उन्होंने सजेस्ट किया है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, इसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे. इससे वो परिणाम नहीं आएंगे जिनकी हम अपेक्षा कर रहे हैं. So what are the various issues involved in this particular case study? And why do you think that the facial recognition system might not work in this case? We have to give our reasons. And what suggestions do you make for the long-term solution as well as the short-term solution to this particular problem? So let us first of all understand the case study summary, because कोई भी case study को analyze करने के लिए सबसे पहले उसकी समरी जो है बनानी होती है और समझना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं. तो पहले समझिए समरी. तो यू आर पोस्टेड एज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वेयर लो एनरोलमेंट एंड लो स्टूडेंट टर्न आउट इज देयर. टीचर्स एब्सेंट रहते हैं, स्कूल में आते नहीं है, which actually demotivates the students and they also don't attend the schools. And some local schools are being merged with the district school which is far away. And families are now protesting, कहेंगे इतनी दूर हम बच्चों को कहां भेजेंगे. और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो कि मिनिस्टर ने सजेस्ट किया है एज ए सॉल्यूशन, यू डू नॉट थिंक दैट इट इज अ राइट सॉल्यूशन टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. So what would you do in terms of short-term measures as well as long-term measures? That is what is exactly required to be analyzed in this case study. सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमारे स्टेक होल्डर कौन है जो अफेक्ट होने जा रहे हैं, फेवरेबली और एडवर्सली. तो पहले हमारे स्टेक होल्डर है स्टूडेंट्स, दूसरे हैं टीचर्स, तीसरे स्टेक होल्डर है उन स्टूडेंट्स की फैमिलीज जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, चौथा स्टेक होल्डर यू आर द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, एंड फिफ्थ स्टेक होल्डर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर द एजुकेशन मिनिस्टर, जिसने प्रॉमिस किया है कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम हम इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि सभी टीचर जो हैं वो स्कूल्स में आया करें. अब इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस केस स्टडी, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. नंबर 1, lack of
extrinsic and intrinsic motivation in teachers to attend schools. So the teachers are not motivated to attend the schools. And using loopholes for personal benefits, issue of integrity and accountability. So the teachers are finding loopholes in the system and they are using that for personal benefits, and issues of integrity is involved, and also accountability at the hands of the teachers. The third issue involved is negative reinforcement to the students by teachers' absence, and the district schools are very far away. तो तीसरा इशू ये है कि द स्टूडेंट्स आर बीइंग डीमोटिवेटेड, क्योंकि जब टीचर्स ही नहीं आते हैं तो पढ़ाई का मतलब ही नहीं है, वहां माहौल ही नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स भी जो है अटेंड नहीं करते हैं स्कूल्स को। और डिस्ट्रिक्ट स्कूल जिसके साथ ये रूरल स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं वो बहुत डिस्टेंस के ऊपर है। इसके अतिरिक्त इशू ऑफ पुअर गवर्नेंस, as there is barely an accountability of teachers in the system. Teachers are not finding themselves responsible. They are not accountable to the system. Then a technical solution is suggested to this behavioral problem, but this may not produce best results. What is that technical solution? Facial recognition system. Issue of attitude and also attitudinal change to be made in the teachers as well as the students and the parents. Then values of a civil servant, frankly giving an opinion without fear or favor. तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होने के नाते आपको मिनिस्टर को एक फ्रैंक और क्लियर कट ओपिनियन देना होगा, विदाउट फियरिंग एनीथिंग, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, तो सर्विंग व्हाट इज द बेस्ट फॉर द पीपल, द स्टूडेंट्स, एंड एंश्योरिंग गुड गवर्नेंस। तो ये इश्यूज इन्वॉल्व है इस केस स्टडी में। अब देखिए, हमें यह भी देखना होगा कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को हम अपोज कर रहे हैं तो हमें उसके लिए रीजनिंग देनी होगी। तो इश्यूज रिलेटेड टू टीचर्स एब्सेंटिज्म कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय एन ऐप एंड दे रिक्वायर अ ह्यूमनिस्ट अंडरस्टैंडिंग। तो एलिमेंट ऑफ ह्यूमनिज्म इंपॉर्टेंट है टीचर्स के बीच में, हमें टीचर्स के साथ एक वार्तालाप करना होगा। ऐप इंट्रोड्यूस कर देने से हम उनकी अटेंडेंस नहीं इंश्योर कर सकेंगे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द टीचर्स, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स, दे हैव ए वेरी रिस्पॉन्सिबल टास्क टू टीच टू द स्टूडेंट्स देयर प्रेडिकामेंट, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है एंड देयर नीड्स। देन द आइडिया ऑफ ए सर्वेलेंस सिस्टम टू कंट्रोल द टीचर हैज बीन ट्राइड मेनी टाइम्स इन द पास्ट। पीछे बहुत बार ये सिस्टम ट्राई किया जा सकता चुका है, जिसके अंदर हम एक सर्वेलेंस सिस्टम लगाते हैं कि हम टीचर्स की अटेंडेंस इंश्योर कर सके, लेकिन हर बार वो फेल हुआ है। और सडन विजिट्स बाय स्कूल इंस्पेक्टर्स, कम्युनिटी सुपरविजन एंड इवन पंचायत स्क्रूटिनी वर पार्ट ऑफ द एजुकेशनल पॉलिसीज इन द पास्ट 3 decades। पिछले 30 वर्षों से ये सब कुछ किया जा रहा है, सरप्राइज इंस्पेक्शंस, कम्युनिटी सुपरविजन और इवन पंचायत स्क्रूटिनी। Like the app-based attendance recording system, these surveillance systems mechanisms have actually failed to appreciate that teaching is fundamentally a social interaction between whom? The teachers and the students. And it is also about students and teachers putting their minds together. So they have to sit together to solve this particular important issue. So besides that, there seems to be a sense of fatigue amongst the educational community that the goals remain largely the same, plan after plan and project after project. So we have to find out some novel solution to the problem. A teacher's presence is of course necessary, but it is more important that he or she has curiosity and passes on the spirit of inquiry to the students. So the teacher has to produce thinking men and women. They have to pass on the element of curiosity and knowledge and skills to the students. So the reports of the National Commission on Teachers 1983-85, NCF 2005 and the NCFTE 2009 have much that is useful for this purpose. इन स्कीम्स में, इन रिपोर्ट्स में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो टीचर्स के लिए लाभकारी होंगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। All the 3 policy documents argued for treating the teachers like professionals. The teachers must be treated like professionals and not as caged employees
whose presence has to be constantly monitored. ये उनके अंदर से निकल कर आना चाहिए कि उनको जो है बच्चों को पढ़ाना है और ये बड़ा नोबल पर्पस है। उनकी केवल अटेंडेंस इंश्योर करने से काम नहीं बनेगा, उनको हमें प्रोफेशनली ट्रीट करना पड़ेगा, उनको वो इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी जिसको वो डिजर्व करते हैं। 20 साल पहले यूनेस्को डिस्क्राइब द एटीट्यूड ऑफ पॉलिसी मेकर्स टुवर्ड्स टीचर्स एज ए साइलेंट क्राइसिस बाय आस्किंग वेयर हैव ऑल द टीचर्स गॉन, वो सारे टीचर्स कहां चले गए। द फेस रिकॉग्निशन ऐप might end up highlighting the same crisis at the cost of massive investment. फेस रिकॉग्निशन अरेंजमेंट करने के लिए, ऐप लाने के लिए बहुत पैसा भी खर्च होगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना पड़ेगा और अल्टीमेटली अगर उसका परिणाम वो न निकले जो हम चाहते हैं तो ऐसे ऐप का क्या फायदा। एंड देयरफॉर वी नीड टू टैकल दिस प्रॉब्लम फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या लेनी होगी। यू आर द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, तो नंबर 1 शॉर्ट टर्म मेजर होगी मेकिंग अवेलेबल ट्रांसपोर्ट टू द स्कूल चिल्ड्रन, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट स्कूल जो है वो आपका रूरल स्कूल से दूर है, तो आपको स्कूल चिल्ड्रन को ट्रांसपोर्ट करनी होगी। इसके अलावा फीजिबिलिटी ऑफ स्कूल एट ए सूटेबल डिस्टेंस कैन ऑल्सो बी लुक्ड इनटू। स्कूल को ऐसी जगह स्थापित करें जहां पर कि बच्चों का आना जाना आसान हो सके, सुगम हो सके। होल्डिंग मीटिंग विद द टीचर्स to persuade them about the importance of their job, the noble purpose which they have to take care of in building the future of the society, because students are the future of this country. Installing CCTV cameras in the classrooms and staff room to monitor teachers' attendance. So that can also be a short-term measure. Long-term measures क्या होगा? Recommendations for better salaries, better remuneration, better wages, and constant इंसेंटिवाइजेशन फॉर बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो हमें टीचर्स को मोटिवेट करना पड़ेगा, इंट्रिंसिक तरीके से भी, एक्सट्रिंसिक तरीके से भी, एंड गिविंग डिटेल्ड रीजनिंग टू द मिनिस्टर एज टू व्हाई फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम मे नॉट बी द बेस्ट चॉइस। तो हमको परसुएड करना पड़ेगा मिनिस्टर को कि देखिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इज काइंड ऑफ एन एनफोर्समेंट, इट मे नॉट वर्क। वी नीड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम बाय ए म्यूचुअल डायलॉग, by providing incentives and also making the teachers realize कि उनका जो पर्पस है वो ultimately it is to produce thinking men and women and improve the caliber of the students who can serve as the future members of the society. Instituting the best teacher award. So incentives, motivation, awards, rewards, they are a very good way of motivating the teacher. So we must institute Best Teachers Award, Most Present Teacher Award for bringing slow attitudinal changes. तो जो सबसे ज्यादा अच्छी अटेंडेंस देता है उसके लिए अवार्ड करिए, या जो अच्छा परफॉर्म करता है बेस्ट टीचर उसके लिए अवार्ड करिए। तो लोग एक दूसरे के साथ स्पर्धा करेंगे ताकि उनको वो रिवॉर्ड या अवार्ड मिल सके। क्रेडिट पॉइंट्स ऑफ अटेंडेंस फॉर प्रमोशन। तो जो बच्चा या जो टीचर जो ज्यादा अटेंडेंस, अच्छी अटेंडेंस रखेगा उसके लिए भी हमको इंसेंटिव देना पड़ेगा। टीचर्स को प्रमोशन करने के लिए एक बहुत अच्छा मापदंड दिया जा सकता है कि जो सबसे ज्यादा अटेंडेंस लाएगा, जिसके खुद की अटेंडेंस ज्यादा होगी, जिसके क्लास में बच्चे सबसे ज्यादा अटेंडेंस होंगे, उसको प्रमोट किया जाए। बिसाइड्स डेवलप बेटर टेक बेस्ड सिस्टम्स एज टीचर्स मे नॉट फेस डिफिकल्टी, ताकि अच्छे टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आप जानते हैं हैज ब्रॉट अबाउट मेनी इंप्रूवमेंट्स इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। So we will have to develop better tech-based systems because teachers may not face difficulty in getting over that particular technology. So these are some of the short-term and long-term measures, and this is how you will solve a case study. तो आपको जो केस स्टडी GS4 पेपर में मिलेंगी, जितनी केस स्टडीज आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आप दक्ष होंगे, प्रखर होंगे, और आपके लिए संभव होगा कि बहुत छोटे से समय के अंदर मुख्य बिंदु आप जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे और केस स्टडी को इस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे कि जो एग्जामिनर है वो आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत शीघ्र हम लोग एक नई केस स्टडी लेकर पुनः आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।